And as I said, I was 17 years old when I joined the industry, and his first job was Swastik, and I worked for 3 years, and I did some multiple shows like Radha Krishna, um, Kanufal Data Shani, Chorus. And also when I talk about fashion, it shows also the dark side of it. तो तुम्हारी पोजीशन लेने के लिए बहुत सारी लड़कियां हैं, got it? So it becomes also scary for a kid who is growing up कि भाई ये सब तो होता है, अब ये आपको फेस करना है क्या? तो but I have a amazing supportive parents, and thank God I'm a younger in the family. इसलिए मैं बंगाल गया हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे में बंगाल की अदा है और बिहार का बेबाकपन है. I did Class, which was an official adaptation of Elite, and that was one of my favorite shows back then. तो सौरभ, आपका एक्सपीरियंस सबसे बेटर किसके साथ रहा, नेटफ्लिक्स के साथ या प्रकाश झा के साथ? सौरभ, आपको कभी ये लगता नहीं कि नेपोटिज्म है? अभी बहुत सारे लोगों को प्रोडक्शन हाउस में एंट्री ही नहीं मिलती, 5 फ्लॉप के बाद भी वो फिर भी फिल्म करते हैं. मैं किसी एक्टर का नाम नहीं लूंगा, यू नो अबाउट दैट. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर धमाकेदार एपिसोड ऑफ इट्स गपशप टाइम. मैं हूं चिराग. मैं हूं अनिमेश. और आज का एपिसोड एकदम बोल्ड और 100% रियल होने वाला है. तो गाइज, आज हमारे साथ में है एक ऐसी पर्सनैलिटी जिन्होंने G5 से लेके नेटफ्लिक्स और नेटफ्लिक्स से लेके प्रकाश झा एज अ क्रिएटिव प्रोड्यूसर अपनी छाप छोड़ी है. इसके साथ साथ वो एक इन्फ्लुएंसर भी है, जिनके साथ आज हम अपने स्टूडियो में बात करने वाले हैं, और वो है मिस्टर सौरभ. हाय. हेलो सर, कैसे हो? हेलो, मैं अमेजिंग हूँ. आप लोग कैसे हो? हम भी बहुत बढ़िया हैं. अच्छे हैं सर. आप बहुत अच्छे लग रहे हो आज. That's I always look like that. But thank you for the compliment. But yeah. तो सौरभ, हम स्टार्ट करते हैं आपके बॉर्न एंड ब्रॉट अप से. आपका जन्म कहाँ पर हुआ? So मैं born हुआ हूँ रांची में. It's in Jharkhand, and yeah, I've been brought up over there. I've done my schoolings over there, and then after I did my class 12, I came to Mumbai to pursue higher studies. And okay, so what I always say also that there's a humongous transformation which has happened over the years in my life. Like, I have been a very introvert kid. Like, मैं बात ही नहीं करता था और मैं बहुत ही कम बात करता था, and मैं बहुत ही भोला था. But Mumbai, it teaches you a lot. Yeah. And yeah, I've become so extrovert now, and yeah, and I'm much more smarter. I feel I know what to speak, where to speak, and how to turn ways if that is not turning into my way. So yeah, but सौरभ, फैमिली का रिएक्शन क्या था जब आपने इंडस्ट्री को चूज किया? I think so they knew at one point that I'm going to enter this industry somehow. Okay, like जब मैंने ये फील्ड ही चूज किया, so but of course एक होता है, like पहला एक झिझक होता है that class 12 के बाद ये मेडिकल इंजीनियरिंग नहीं करेगा. He's going to choose something else. Yeah. But I have a amazing supportive parents, and thank God I'm a younger in the family. So बड़े भाई है तो उनका बहुत बड़ा सपोर्ट था, and he was the person who actually told me to choose this field. My mom and my brother had a discussion कि other than medical or engineering या law इसको क्या करवाया जाए, because I was totally clueless in my life at what to do. Okay. So then they thought, let him do something else, and that's the reason mass communication came in the picture. And yeah, and thank God, matlab, I have some really amazing parent and a elder brother who's really supported me all throughout, and they are my biggest cheerleaders. Like abhi bhi, matlab, they tell me that ki, sort of we want to see you on screen, which I am not so much. Still, I'm not so confident about, but yeah, but I'm loving what I'm doing, creating content and everything, and they are my bestest, cheerleader. सो आपका सरनेम चैटर्जी है, और आपने मुझे बताया कि आपका बॉर्न एंड ब्रॉट अप रांची में हुआ है ना? सो लाइक आपके रूट्स वहाँ थे या आप कभी बंगाल गए भी हो? नहीं, मैं बंगाल गया हूँ. मुझे ऐसा लगता है कि मेरे में बंगाल की अदा है और बिहार का बेबाकपन है. सो या मतलब दोनों कॉम्बिनेशन इज अ डेडली कॉम्बिनेशन. सो दोनों है मेरे पास. बिकॉज जब आप वर्क कर रहे थे आश्रम के साथ में,
बॉबी देओल के साथ में, जो अभी लॉर्ड बॉबी हैं, उस टाइम उनकी एनिमल नहीं आई थी। करेक्ट। सो एनिमल के बाद उनका कंप्लीटली और भी चेंज हो गया, वो लॉर्ड बॉबी बन गए। सो आपको लगा उसके बाद भी अभी आपका वो था ना, भी स्क्रीनिंग थी जब आश्रम की, या सो आपको कुछ उनमें चेंज लगा कि नॉट आश्रम एट की ऑल, सक्सेस नॉट के एट ऑल, बाद ही इज द सेम cute, amazing person whom I have met before. I think so. I've worked for him. So it doesn't, for some people, any success or any kind of like sudden kind of success doesn't change their behavior, because also if I talk about Bobby, so it comes with the legacy. या ट्रू। तो वो बचपन से वो देखते हुए आ रहे हैं. Okay, maybe somebody, I'm not naming anybody, but yeah, if somebody who has not seen that legacy and suddenly sees the success, उनके दिमाग में शायद जा भी सकता है कि ओ अच्छा अब मैं सक्सेसफुल हूँ, अब मुझे कुछ करना है. ओके, बट बहुत लोग हैं जो ऑलरेडी लीगेसी लेके आ रहे हैं ना, दे हैव सीन फ्रॉम बचपन से, तो उनके लिए तो लाइक आज सक्सेसफुल हो, कल शायद आपका फिल्म या सीरीज वर्क ना करे, एंड मे बी यू माइट बी you come to zero, but again coming from zero you reach that 100%. So वो एक फेज है जो हमारे इंडस्ट्री का है. सो फॉर सम पीपल इट डजंट उतना मैटर. ओके, बट फॉर सम पीपल या. सौरभ, आपको कभी ये लगता नहीं कि नेपोटिज्म है, अभी बहुत सारे लोगों को प्रोडक्शन हाउस में एंट्री ही नहीं मिलती, जितने भी करेक्ट. एस्पायरिंग एक्टर्स हैं, अभी जो नेपोटिज्म है उनको, उनके लिए शायद एंट्री इतनी ज़्यादा इजी हो जाती है, उनको डायरेक्ट फिल्म मिल जाती है, 5 फ्लॉप के बाद भी वो फिर भी फिल्म करते हैं। मैं किसी एक्टर का नाम नहीं लूंगा, यू नो अबाउट दैट, बस आप इसी इंडस्ट्री में हैं, तो आपका उसके ऊपर क्या कहना है? So I feel that for an outsider it's a very different challenge altogether, because क्या होता है कि of course first you have to figure out कि कौन सी production houses है, how to enter only. It's a big task, but that's why I say that build connections, and you have to build that. You have to be smart enough to build those connections. Okay, and if you're not, मतलब, and also for the even for the even the people who has, like maybe for the nepotism, or they also building connection every day. Okay, because maybe शायद they know one kind of production house, but they might not know another kind of production house. Okay, तो वो लोग भी तो वही कर रहे हैं. तो for us, for the outsiders, I feel the task becomes 50% more extra. Okay, in terms of first you have to build those connections and then you can enter. But that's how our industry works, and that's how, like, if you build right connections, and it will definitely land you in right place. सौरभ, वो मूवमेंट कब आया जब आपने फाइनली डिसाइड किया कि मुझे यही करना है? I think so. It came like when I started my first job, and I thankfully I got all right people at a very young age of my life. I was 17 when I entered in this industry. So a guy who is 17 years old and trying to make his way in the industry, उसके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. सो एग्जैक्टली पता नहीं क्या करना है. आपको डायरेक्शन में जाना है, आपको सिनेमेटोग्राफी करनी है, या आपको क्रिएटिविटी, पता नहीं क्या आपको करना है. बट या व्हेन आई एंटर्ड माय फर्स्ट जॉब व्हिच वाज स्वास्तिक प्रोडक्शन, एंड दे आस्क्ड मी अ वेरी सिंपल क्वेश्चन कि आपको, आपकी स्पेशलिटी क्या है, आपको हम क्यों ले. सो मैंने उनको यही बोला था कि आई लव टू रीड, I love to write, and that's when the point came when they said, okay, you should go to creative and become a creative. And I didn't know before that कि creative होते क्या है, करते क्या है creatives. Okay, and when I entered this creative, world, and I felt that, oh, this is something which I should do and I should pursue this, because आपको सब कुछ करने मिल जाता है. You are from the inception of the project, from the creating a project, से लेके एंड डिलीवरीज तक आप उस प्रोजेक्ट में जुड़े हुए रहते हो. सो वो प्रोसेस बहुत ही मैजिकल होता है. ओके, एंड आई वांट टू बी पार्ट ऑफ एवरी पार्ट ऑफ मेकिंग अ कंटेंट, और मेकिंग अ फिल्म, और मेकिंग अ सीरीज, और टीवी शो, व्हाटएवर इट इज. तो मुझे लगा कि ये बहुत अच्छी चीज है. इफ यू आर अ डायरेक्टर, और इफ यू आर डूइंग एज एन एडी, और इफ यू आर वर्किंग एज अ सिनेमेटोग्राफर, आपका एक टेक्निकलिटीज, आप एक फील्ड में आप स्टक हो सकते हो. बट बिकॉज यू आर क्रिएटिव, यू आर, आपका होराइजन काफी इंक्रीज हो जाता है. एंड दैट्स द पार्ट व्हेन आई फेल्ट दैट ओके आई वांट टू डू दिस. तो सौरभ, आपकी शुरुआत कैसे हुई नेटफ्लिक्स और प्रकाश झा में काम करने के लिए?
वो तो अभी अभी मैंने काम किया and I'm working right now, but it started with my first job. I landed in Swastik production as a creative. And as I said, I was 17 years old when I joined the industry, and it was first job was Swastik, and I worked for 3 years, and I did some multiple shows like Radha Krishna, um, Kanufal Data Shani, Porus, Mahakali, and I did lots of Maitho, and that's the when I'm like कि थोड़ा और कुछ अलग करते हैं, and that's the reason I suddenly landed to CID. So from Maitho I just landed to a more like crime based shows and all. So I did CID for a year, 2017-18 जब वहाँ पे उस टाइम पे CID आ रही थी, and then I got really interested where you need to create shows which is more crime based, and that's when I thought that that's my forte. And that's the reason I joined after working in CID. I joined Z5, and 4 years I was with Z5, and I made mostly crime shows, which is Abhay season 1, Abhay season 2, Abhay season 3, and lots of other crime shows. And yeah, and then I got an opportunity to work with few Netflix shows also. Like I did Class, which was an official adaptation of Elite, and that was one of my favorite shows back then. So yeah, so it was I was like really excited to कि मैं हिंदी में Indian audience के लिए वो कर पा रहा हूँ. और then yeah, and then I shortly worked for Hira Mandi also. And now I'm currently working with Prakasha Productions, and it's really interesting in its own, and everything has its own way to learn, and every production houses or every person whom I've worked with, I'm really fortunate that I have grown in my life, and I've learned everything uh, more on the set or more with the interacting with people rather than what I have studied maybe. So yeah. सो आपका क्लास के साथ में कैसा एक्सपीरियंस था? आपने एलीट कहा, एलीट मेरी पर्सनली भी फेवरेट है। उसकी सीरीज मैंने आपको कैसी लगी? मुझे एलीट बहुत अच्छी लगी। मैंने But हिंदी क्लास कैसी लगी? क्लास मैंने हिंदी में सिर्फ एक सीजन देखा। क्लास इज एक ऑल्सो ही गुड। सीजन देखा, अभी एक ही सीजन आया है। एक ही सीजन हाँ, आया है ना, हाँ, अभी सेकंड आने करेक्ट, वाला है। हाँ। मैं तो आपको ये चूज करना है एलीट या क्लास में से, तो एलीट आप ऑब्वियसली एलीट ओजी obviously, yeah. है ना। तो आई रिमेम्बर दैट मैंने आपको टेक्स्ट किया था हाँ, इंस्टा पे जब आपने क्लास का सेकंड सीजन का कुछ पोस्ट करेक्ट किया था। करेक्ट आप करेक्ट नेटफ्लिक्स के साथ में थे ना करेक्ट उस टाइम में। करेक्ट। तो मैंने कहा था कि मैं इसका बहुत बड़ा फैन हूँ Hmm. एलीट का, और ओरिजिनल क्लास मुझे I'm तभी पता also, चला if था I अभी वो। also feel that Elite has been the more like that is something really the OG, and it has been made so nicely by Yave. And so we also tried making it. The makers tried making it, but yeah, the sentiment which is attached, जो Elite के साथ sentiment attached है, and all across the globe जो attached है, वो create कर पाना भी बहुत मुश्किल था. So sometimes I feel that जो ओरिजिनल है वो ओरिजिनल ही रहे, उसका अडेप्टेशन ना बने तो ज़्यादा बेटर है। सो मैंने आपको टेक्स्ट किया था कि मैं अगर क्लास में दोबारा से कभी कास्टिंग हो इसके न्यू सीजन की, तो प्लीज मुझे बताइएगा कौन इसकी कास्टिंग करता है, क्योंकि एलीट का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। And so class was done by Panchami Garvi. She was there were two casting directors. There was Ashutosh, who was there from Bodhi Tree team, and there was Panchami Garvi. So yeah. तो सौरभ, आपका एक्सपीरियंस सबसे बेटर किसके साथ रहा, नेटफ्लिक्स के साथ या प्रकाश झा के साथ, जो कि आप अभी करंटली? ऐसे तो मैं टेक्निकली बोलूं तो मैं अभी तो मैं प्रकाश ही बोलूंगा, अभी तो मैं उनके साथ हूं। It's a little bit controversial because Netflix is a global platform. Yeah, I know both had their own way of. I learned a lot from both. Netflix या Z5 जो भी channels में होते हैं, it's more corporate job where you are bound to do certain tasks which they tell you. Okay, so उसमें क्या होता है कि आपको उतना creativity जो होता है, वो आप जब आप प्रोडक्शन हाउस में काम करते हो या व्हेन यू वर्क विद स्टॉलवर्ड्स लाइक प्रकाश झा या भंसाली सर, वो क्रिएटिविटी फिर आप उनके साथ आप सीखने को बहुत मिलता है. इफ यू आर वर्किंग with the platforms, then responsibility is higher in that way. Like there are lots of responsibility which comes to you because you are the final checker and the final decision makers. But your creativity जो आप चाहते हो कि जो मैं कुछ कर पाऊँ या कुछ सीख पाऊँ या कुछ मैं अपना ला सकूँ, वो आप I think so when you work with the directors like this, that you can do in that way. So I feel both had their pros and cons. Lots of events. When I started going for lots of events and all. Started building connections, and so many connections that
finally I started applying everywhere, and it helped for me. So and also end of the day, if you are also going to events or you're meeting people, then what are you talking? That matters a lot. Okay, how are you uh, putting your self in front of others is very important, क्योंकि पता है बहुत लोगों में वही एक प्रॉब्लम होती है जो मैं देखता हूँ, मैं बहुत मतलब लोगों से मिलता हूँ। ओके, पहली बात तो बात ही नहीं करने आता है कि बात क्या करोगे। ओके, प्लीज स्पीक अप फॉर योरसेल्फ एंड प्लीज हैंडल योरसेल्फ एज अ पिच। ओके, यू आर अ कमोडिटी, एवरीबडी इज। आप बिजनेस कर रहे हो, आप मेडिकल फील्ड में हो, आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, डॉक्टर्स को आप कभी बेचते हुए सुनिए, कभी आपको समझ में आ जाए कि दे आर आल्सो सेलिंग देयर that they are the best with services, right? So as a person where our field is all about communication, and if वही नहीं है तो फिर आप क्या कर रहे हो इस फील्ड में, या तो आप कुछ और कर लो, you know. And everybody, like, if you want to become a teacher, okay, it's all about communication. Okay, whatever you want to do in your life, okay, I know, and it doesn't matter आपको हिंदी में बोलना है, आपको इंग्लिश में बोलना है, but please speak something which is also saneful. And if I am hearing that from you, I feel that okay, this is a person who can add value to me. And that's what matters a lot. What are you adding to the table? What is your USP that you are bringing to me, that okay, now I'm hooked, that okay, that's an interesting guy or girl I met. Okay, and and then maybe the possibilities um of you working and getting good opportunities increases. And I had to also talk about Kangana Ranawat, okay, said in one of the interviews that now when I talk about nepotisms, okay, the training of the star kids has been so nicely done over the years. Okay, they know how to communicate. Okay, so now if you want to enter into this industry, okay, you have to also have a certain kind of training. Okay, I'm not saying you go to acting schools and do all that. First, have a basic communication skills, like properly. Okay, you should know how to and what to speak. You should talk about cinema. You should talk about something which can, for me, it figures out ki, oh, okay, that's an interesting guy. He has so much of knowledge, and then he or that person has something to give it to me, and that would interest anybody who is working in the industry or anywhere, I think. सौरभ, कास्टिंग काउच बॉलीवुड में मिथ है या रियलिटी? आपको क्या लगता है? अभी आप काउच पे बैठे हैं, आप सच बताइए। हाँ, काउच पे हाथ रख के बताइए कि आप सच बोलोगे क्या बोलोगे? I think that's a very difficult word also to say, casting couch. But it's also about what I say, that in life generally also, and if you want to take this into this question also, everything is give and take. Right? Okay, ठीक है, and बचपन से मैं देखते हुए आ रहे हैं. Okay, ठीक है. So what I feel is everything is mutual. Okay, ठीक है, and also with much respect it comes. Okay, ठीक है, you can deny if you don't want to. Okay, but it exists. Also, what I also feel that this question comes a lot to the people from the industry, but taking favors, okay, is there in every industry. Okay, and it's there. Okay, now it's basic, like if you be in the corporate world, okay, ठीक है, जो MNCs होती है, okay, वहां भी बहुत ज्यादा है, बट कोई बात क्यों नहीं करता. Okay, हमारे फील्ड में इतना बड़ा वो टैबू जैसे लगा के रखे कि कास्टिंग काउच, वो वर्ड दे दिया है, एंड हैज बिकम लाइक मतलब कि हाँ, तो सब डिस्कशन इसी पे होगी. सो फॉर मी इट फील्स दैट कि हमारी फील्ड तो उसमें बहुत अच्छी है कि इफ यू डोंट वांट टू डू, और इफ यू डोंट are not eager to, okay, ठीक है, everybody is absolutely okay with it. सौरभ, आप ग्राउंड रियलिटी जानते हैं एक एक्टर के स्ट्रगल की, या आराम नगर क्या है, या मलाड में कहाँ पे ऑडिशन होते हैं? मलाड में भी ऑडिशंस होते हैं. मलाड में भी ऑडिशंस होते हैं, कहाँ पे प्रोडक्शन हाउसेस तक पता था. Okay, so it has really taken a lot of time for me to understand this whole culture of actors and Aram Nagar especially. Okay, like because जैसे मैंने बोला कि I have been into platforms and
मतलब it has happened like really 2 साल पहले जब मुझे there was an actor friend, okay, and उसने मुझे बोला कि तुम्हें कैसे पता होगा कि हम लोग क्या फेस कर रहे हैं and all that, and मैं तुम्हें कभी लेके चलता हूँ आराम नगर, okay, so and I've heard about this but I've never gone to आराम नगर because of course we are all the creators who are sitting in the platform, they are living, we have our offices in Worli, Lower Parel and everywhere, and they don't know the actual struggles of what these actors are facing, okay. तो मैं सोचा चलो देख के आते हैं, okay, ठीक है. And I actually went as an actor, okay, कि चलो ठीक है, मतलब let me figure out कि how if somebody who has come बाहर से, an outsider came to Mumbai, what they have to face, and when they travel to Aramnagar, क्या है ये Aramnagar वाली जिंदगी, okay. And oh my god, it was such a setback in just one day, oh my god, okay. First of all तो वो क्या है जो लोग बोलते हैं unfit fit, I'm like okay, that was like कि मेरे दिमाग के ऊपर चला गया क्योंकि I am thinking I am fit, I am healthy, मैं अच्छा खाना खा रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, but how, मतलब how can somebody say fit unfit, or like somebody like saying that you are not fit for me or not fit for particular thing, and I'm like कि मतलब sitting in Aram Nagar, okay, I'm sorry to say, but of course there are legit good casting directors who are working now from Aram Nagar, but not specifically, I'm not talking about Aram Nagar, but also there are few very obnoxious, I would say, casting agencies and casting directors who says these words, and I'm like कि भाई हम लोग वहां बैठ के वैसा कभी नहीं बोल रहे होते. Maybe you might not be suitable for that character which I might be casting for, okay, and which maybe the writer might have perceived, but that doesn't mean nobody gives you a right to say that you are unfit, and you are just like segregating people like that, and I'm like ki, what is this happening, okay. And that's really a setback which I thought कि भाई ये क्या फेस करना पड़ रहा है, because मतलब एक्टर्स के लिए बहुत ही चैलेंजिंग है हाउ टू फेस दीज वर्ड्स, ओके. सो बहुत ही ये obnoxious चीजें हैं, and I think so nobody should say those things. I mean, so you should have a better way to, if you want to reject also somebody, so there's a better way to handle those things, and say those rejections not completely on the face, and but it's there. I think so it should be improved. I think so. पंकज त्रिपाठी सर यही बोलते थे कि मैंने इतनी बार लाखों बार कि फिट अनफिट सुन लिया है, लगता है कि कभी वाइफ भी मुझे आके बोल देगी अनफिट. मतलब I feel कि how are you judging an actor if you have not seen the performance? How are you judging them and just seeing the persona, and you are telling them fit or unfit? Like who? How? मतलब आप, if you are an actor, you have to first see your performance, right? And maybe you might lack in that, and then I might say that okay, आपकी performance उतनी अच्छी नहीं थी जितने बाकी लोग हैं, okay, ठीक है. And that's the how it should be, right? Okay, but like ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई मोटा है, पतला है, कोई ये है. For me, it became, for me, like, it was a body shaming for me. Okay, and me coming from whatever I have worked in the industry, for me, somebody saying like this, I'm like, oh my god, okay, this is something which is who gave you that rights? सौरभ, इंडस्ट्री में पावर डायनेमिक्स कैसे चेंज होते हैं और इन्हें कौन कंट्रोल करता है? I think so. There are lobbies which are there, okay, and अब मानो ना मानो, या तो आपको पता भी है कि बहुत लोग बोल भी चुके हैं, अभी कोई कुछ नया तो नहीं है जो मैं बोलने वाला हूँ, कि there is a lobby system, and there are like people who are running the industry, and I feel that it's okay that कि मतलब है तो है, अभी हर जगह है ना, मतलब वो तो अब है कि you have to मतलब sometimes bow down to those powers, okay, and I feel there's nothing wrong in that, which I feel, maybe बहुत लोग को नहीं समझ में आता है, okay, ठीक है, but I feel that okay, until and unless you are happy, you are getting whatever you want to do and what you want to be in your career, okay, if it suffice you, if आप खुश हो अपने life में, so even if you have to work as per those power dynamics, okay, you should, you don't know, like maybe. True.
आज का स्टारडम कितना रियल है और कितना मैन्युफैक्चर्ड है? I think PR plays a vital part, definitely. Okay, and आजकल सब कोई PR करवा रहे हैं, बिल्कुल। चाहे वो मैं हूँ या कोई भी है. ओके, ठीक है. Some people, like, everybody is trying their own in whatever ways they have. They are trying to build their stardom, or they're trying to, ये manufactured. मतलब I would say that वो एक एरा वो चला गया है जहाँ पे हाउ वी हैव सीन कपूर्स या शाहरुख सर या सलमान सर, वो एक जो एक स्टारडम है ना, ओके, वो आई थिंक सो वैसा कुछ रहा नहीं है. ओके, it is played in a very conscious way that कुछ कुछ जो हम देखते हैं, जो अभी बहुत सारे जो स्टार्स निकल के आ रहे हैं, of course it is like 80% now it is completely PR based, and it's very infused, very strategically. Okay, like if you figure out also about how Sayara worked. Yeah. Okay, ठीक है. For me, it is a very strategic move by. Now, what they have also started doing is basically how, like, also I would say Dhurandhar. Yeah, Okay, Dhurandhar. ठीक है. It worked in the second week more than the first week. Why? Because बहुत strategically आजकल digital infusement हो रहा है. Yeah. Where now उनको पता है कि क्या चलना है. Okay, maybe Ranveer Singh might not work. Yeah. Okay, so now they had played everything in favor of Akshay Khanna. True. Okay, एक गाना फेमस कर दिया या उनका एक मूव फेमस कर दिया. ओके, ठीक है. या तो सयारा में दैट होल दैट you suddenly see people going to the theaters and crying. Okay, ठीक है. That's how people have started doing it. Okay, that's a very different PR machinery that lots of big PR agencies, big production houses are doing it, because that's how it is making that. क्योंकि आपको देखना, अब लोग क्यों जाएंगे देखने के लिए ऐसे आर्टिस्ट को जो या नया लॉन्च हो रहा है, और मे बी देयर इज अ बिग थिंग ऑन स्टेक. ओके, सो इफ यू डू ऑल दैट, ओके, इट समटाइम्स वर्क्स बिकॉज एंड ऑफ द डे सब सोशल मीडिया है. बिल्कुल. एंड यू नेवर नो व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग इन टुडेज सोशल मीडिया. बट आप जो देख रहे हो, वो चीज आप देखते हुए आप जा तो रहे हो ना, सो इट्स वर्किंग फॉर देम. सो या सौरभ, आपको पता है एक्चुअल में ग्राउंड रियलिटी क्या है? आजकल कास्टिंग ही फॉलोवर्स के बेसिस पे होती है आर्टिस्ट की. maybe see, okay, I will tell you, if brief as ऐसा आए जहाँ पे we need followers, okay, ठीक है, it matters. Okay, what also we have started doing right now is जहाँ पे we, for example, definitely we need an influencer or something, we now ask for dashboard, because we know that कि आप followers खरीद सकते हो, आप likes खरीद सकते हो, आप सब कुछ खरीद सकते हो, but आप अपना reach नहीं खरीद सकते, because that's very natural. Okay, ठीक है. So people sitting over there has become very intelligent, so they also know that कि आपकी reach कितनी आ रही है, उस हिसाब से then we try to encash that. Okay, but having said that, जो अच्छी फिल्में बन रही है या जो अच्छी फिल्में बन रही है या जो अच्छी सीरीज बन रही है, उसमें ऐसे नहीं होता है. ओके, ठीक है. अब अगेन से दैट इट्स ऑल अबाउट कितना आप आपका प्रेजेंस कितना है. ओके, एंड यू हैव सर्टेन काइंड ऑफ followers in terms of fan base also, I would say. Okay, कि for example, if कोई भी इंसान okay आज एक प्रोजेक्ट कर रहा है, okay, ठीक है, they will first, it's a business, right? Yeah. Okay, so if वो उसको वो चाहिए कि उसका ROI क्या है. Okay, is the project they are making उसका profitable business है कि नहीं, चाहे वो सीरीज हो, फिल्म हो, जो भी हो. Okay, so any actor in that matter, because they are the face of that project. Okay, ठीक है. So that actor can give that kind of profit business to the person who is investing that money or not. So in that way, okay, if that actor is giving that in terms of whatever influencer हो, या तो वो उसका यूट्यूब चैनल हो, बहुत यूट्यूबर हो, या फिर कुछ और हो. ओके, या तो he has done lots of good projects and he has a certain kind of fan base. तो that matters, and that is one category where we definitely choose actors. Okay, and that's the reason now, मतलब we choose like actors like Ranveer Singh, Ranbir Kapoor and all. So सौरभ, OTT ने बॉलीवुड का पावर कैसे चेंज किया? Yeah, so after the OTT has come, and post lockdown we have seen that phase जहाँ पे only the
movies that are made for theater viewing and like a larger film, larger than life films are working. Okay, nahi to what has also happened that after the OTT has come, okay, in our the global market has opened up for us, Yeah. and we are watching shows, we are watching films from all sectors of everywhere, all the countries. So abhi kya ho gaya ki content has become really like like we are looking forward to watch some really good content. Yeah. And if it's not there, then of course we feel disappointed. And also something when I talk about ki jaise Indian jo ek mindset hai ki for the audience, okay, they are going if there's a star and it's a big star, okay, and if you don't have that star value, it's really something that concerning that कि वो pull नहीं हो पा रहा है जो पहले हो जा रहा था बहुत ही organically. People just think now कि चलो ठीक है, let's wait for the OTT release and we'll watch it on OTT. Yeah. सौरभ, आज के न्यू कमर सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं इस इंडस्ट्री में आने से पहले? I think they lose patience in a very small span of time. Yeah. And yeah, it is like a very cutthroat competition. So either you have to be very smart or आप बस नहीं तो आप फंसे रह जाओगे इस पूरी मायानगरी में. So yeah. सो सौरभ, आप जैसे इंडस्ट्री के अंदर हो, मेन स्ट्रीम में हो, तो आपको पता है कि एक्टर के अंदर क्या रिक्वायरमेंट है, हम राइट, कैमरा पे हमें क्या चाहिए. सो आपके हिसाब से एक्टिंग स्कूल्स इज वर्थ इट फॉर न्यू कमर्स और नॉट? Okay, so honestly, मैं कभी acting school में गया नहीं हूँ, तो I don't know what education exactly what they are giving. Yeah. But of course, I've spoken to a lot of actors and all. Okay, ठीक है. There are some really good acting schools. Okay, but for some people it's also a very money making business. Yeah. Okay, where they are just minting money and they are not helping or not giving them the reality which is much required for the actors who are going and learning over there. Okay, तो मुझे ऐसा लगता है कि rather than going to full-fledged acting schools. Okay, this is a very honest and very, I would say, my opinion. Okay, Yeah. ठीक है. Maybe people might differ. See, what I feel that learning to होना बहुत important है. Okay, until unless you garner that knowledge, okay, you might not be the best in that field. Okay, ठीक है. चाहे आज मेरी direction में मुझे करनी है, तो I would rather learn those techniques and learn direction. Same goes with the acting. Yeah. But it also should be that for me, the better part is that rather than going a full-fledged acting school, just start with workshops before. Okay, so that you can do small workshops and you learn what is happening in the industry. सौरभ, आज भी मुंबई सपनों का शहर है या फिर वो सर्वाइवल जोन बन के रह गया? सपनों का शहर तो डेफिनेटली है, बट आप सपने देखते हो तो सर्वाइवल भी आ ही जाती है. ओके, क्योंकि आपको वो सपने पूरे करने के लिए आपको वो सारे चैलेंजेस, सारे जो टास्क है वो आपको पूरी करनी है. तो इट्स ऑल्सो अबाउट सर्वाइवल. Okay, and how well you are surviving and how you are playing this whole game of survival and getting the stardom or whatever ambitions you have come for. Okay, ठीक है. And you can play it really well. This ये शहर आपको इतनी देगी कि ये शायद वो कोई और शहर या कोई और सिटी नहीं दे सकती. सो सर, इट्स आवर रैपिड फायर राउंड. इसमें मैं आपको कुछ वर्ड्स बोलूंगा, ठीक है, मतलब हम बोलेंगे, ठीक है, आपको उसको वन वर्ड में आंसर देना है और क्विक, ज्यादा टाइम आप नहीं ले सकते. Done. वन वर्ड फॉर बॉलीवुड. Facade. नेटफ्लिक्स और थिएटर. Netflix and chill. फेम या पीस. Fame. स्ट्रगल या कंफर्ट? Struggle. Maybe struggle comes with comfort comes with the struggle, right? Yeah. So, yeah. One habit that changed your life. Maybe being disciplined in my and not procrastinating things. Maybe I'm still trying to not to do Nice. One fear you still have? that. Fear of losing my loved ones. That's the only fear I have. Biggest misconception about industry. That everything happens in the party and you get opportunities in parties. No, darling, you don't get. Nice.
सक्सेस का रियल मीनिंग आपके लिए? I think be grounded always. सौरभ, इंडस्ट्री का सबसे बड़ा अनकंफर्टेबल ट्रूथ? That people are acting in real life more than their real life. क्या बॉलीवुड अपनी सोल लूज कर चुका है? I don't think so, because it will never lose its soul. फेम, पावर और मनी, सबसे ज्यादा डेंजरस कौन सी चीज है? Fame, because it's difficult to handle for so many people I've seen. So yeah. सौरभ, अगर आज आप एक आउटसाइडर होते तो आपका रोड मैप क्या होता? जो मैं पहले बोला था और जो मैंने किया भी है, is that building connections, because that's the only way out to enter this industry. इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का फ्यूचर रेवोल्यूशन या रेपुटेशन? I think so. It's revolution, because we are watching content across globe, which I said before, and it's time to really get into more content oriented films, and that's the reason like we are going and watching Lapata Ladies and Homebound, and yeah, it's going to evolve more and more. Nice. So Saurav, are you dating someone or trying to find? Oh, okay, I'm very much single. Okay, and trying to find, maybe yes, because who doesn't need a good companion in their life, and if that comes in the right time with the right people and with the right mindset, where your vibes matter and that energy matches with you, okay, so yeah, that person will be there for you always. सो सौरभ, हमारे लिए ये बहुत बड़ी चीज़ थी आप हमारे चैनल पे आए और आपने हर एक क्वेश्चन का आंसर बड़े ही ऑनेस्टी के साथ में दिया, Thank you. बहुत ही पोलाइटली दिया। आई होप जितने भी स्ट्रगलिंग एस्पायरिंग एक्टर्स होंगे या इस इंडस्ट्री में आने वाले होंगे, उनको लिटरली में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपका ये पॉडकास्ट देख के। सो थैंक यू सो मच। Also, I feel that we should stop also saying struggling actors. I would rather say aspiring actors, because everybody is struggling in their own life. I'm struggling, everybody's struggling. There's कुछ कोई नहीं जो struggle नहीं कर रहे हैं. Struggling is a harsh word for me, but yeah, for all the aspiring actors or maybe whoever wants to come into the industry, I would say at the end of this conversation that keep doing, because the fame is for real, and if you can um, and please don't lose hope. That's very important, because बहुत बार this Mayanagri में you run out of patience, you run out of hope, but don't lose that and keep on working on your craft, and that will really help you grow. So yeah. Thank you Saurav, Thank you so much. थैंक यू गाइज। ये हमारे साथ थे सौरभ चटर्जी, जो कि नेटफ्लिक्स, प्रकाश झा, इन सब में एज अ क्रिएटिव प्रोड्यूसर काम कर चुके हैं और अभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एंड कंटिन्यूसली हमारे पॉडकास्ट को देखने के लिए थैंक यू। अभी तक यहाँ तक आप जुड़े हुए हो, यहाँ तक आप देख रहे हो, इसके लिए थैंक यू, थैंक यू। तो गाइज, आपने स्ट्रगल तो बहुत देखा होगा मुंबई में, अलग अलग सिटीज़ में। रांची जैसे एक छोटे से शहर से जब सौरभ मुंबई में आके नेटफ्लिक्स से लेके प्रकाश झा तक में एक क्रिएटिव प्रोड्यूसर, जो कि एक बहुत बड़ा लेवल है, वहाँ तक पहुँच सकते हैं। सो हर एक शहर का, हर एक गांव का लड़का लड़की सब आर्टिस्ट बन सकते हैं। हर एक डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में आप अपना नाम बना सकते हैं। सो नेवर लूज योर होप और कीप कनेक्टिंग विद अस। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। एंड हमारे पार्टनर है चिराग एसोसिएट्स, चिराग फाइनेंशियल सर्विसेज। इफ यू वांट एनी टाइप ऑफ लोन, सो प्लीज लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, जाओ और लोन के लिए जो भी आपकी प्रॉब्लम है, नहीं हो रहा, जो भी कुछ भी है, तो आप जाइए और कनेक्ट कीजिए उनसे। सो गाइज, हमारा सेकंड पार्टनर है श्रिश ज्वेलरी। अगर आपको किसी भी तरीके की ज्वेलरी चाहिए, लाइक गोल्ड, सिल्वर, ऑक्सीडाइज, तो हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे है, तो आप जाइए और शॉप कीजिए और डेफिनेटली आपको अच्छे लगेंगे। और हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको हमारी ज्वेलरीज कैसी लगी। सो ऐसे ही मजेदार पॉडकास्ट देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। इट्स गपशप टाइम।